Good morning, student. Today we will learn the practical of interfaces and some more practicals. As you know that the ASP.NET doesn't support multiple inheritance. Instead of that, it provides a facility of interfaces. So interfaces are similar structure like class with some special characteristics and rules and regulation. In interface, everything whatever we are declaring is going to be abstract. So all interfaces are going to be defaultly abstract. We need not to write abstract. So what do you mean by abstract? We are going to write just the name and details. We are not going to implement anything in the interface class. Okay, so it is not a class, it is referred as a interface. So how we are going to do it? We are going to show the result of interface methods execution. Okay, with the help of page load event. So we are just getting two labels. In that two labels, we are label one page we are putting area of circle. Okay, label two page we are putting area of rectangle. So again, I'm talking about interface. So it is defaultly abstract. We can declare variable also. Okay, and then methods also, but we cannot implement that one. So what is required? Whenever we are using an interface to achieve the facilities such as multiple inheritance in C++, so we need a class that must extend the implement the interface, but all the methods that there is a rule, whatever interface we are implementing in our class, our class which implements the interface has to implement all the methods written in the interface. Okay, so for example, this is our interface. Okay, here only we are going to write the name of method and semicolon. This is something like you can see here, सेमिकोलन है तो मेथड कॉलिंग जैसे दिखता है, बट मेथड कॉलिंग नहीं है, क्योंकि मेथड कॉलिंग कैसे होता है? ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दिट बिकम्स अ डिक्लेरेशन ऑफ मेथड. What is the return type of method? Double. Okay, what is the name of method? Show. And two parameter, double s double t. Okay, so that can be width, height, you can put anything if you are going to calculate the area. And there is nothing extra in this particular interface. Okay, then we are writing a class rect, rectangle के लिए class rect, which implements the area interface. Okay, so this particular lines we are reading when we are we are using a inheritance, then we can read is class rect extends some class. But when we are implementing interface, we have to read like that, class rect implements area. ये रीडिंग का एक मैकेनिज्म है उसका. Okay, interface is always implemented because it is not extended. So we are reading like this. क्लास रेक्ट इम्प्लीमेंट्स एरिया. तो एज पर रूल मैंने बोला है कि अगर इम्प्लीमेंट होता है किसी क्लास में, तो रेक्ट क्लास को कंपल्सरीली ये मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. यस, ऑब्वियसली रेक्ट क्लास का अपना खुद का भी कोई मेथड हो सकता है एक्स्ट्रा. जैसे इनहेरिटेंस में जो भी डिराइव्ड क्लास है उसका अपना भी मेथड हो सकता है, सुपर क्लास का भी मेथड हो सकता है. सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई है. बट यहाँ पे इंटरफेस के बारे में एक रूल है कि इंटरफेस में जो अगर आप इंप्लीमेंट करें, तो इंटरफेस में अगर एक मेथड लिखी है तो वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगी. यहाँ पे जो डबल वाला मेथड है, अगर दो रहेंगी तो दोनों के दोनों इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग सिंपल एग्जाम्पल. सो क्लास रेक्ट इम्प्लीमेंट्स एरिया. देन वी आर राइटिंग हियर पब्लिक डबल शो. मेथड एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन है. ओके, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हमने लिखा रिटर्न यस स्टार टी, यस इंटू टी. रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो विड्थ इंटू हाइट रहता है, उतना आपको पता है. ओके, तो दिस इज सिंपल क्लास, इसको यहाँ पे एंड कर दिया. ओके, यहाँ पे याद रहिए कि इसका मेथड हमको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग इंटरफेस का मेथड, बिकॉज दैट इज द रूल. देन वी आर टेकिंग अनदर क्लास, क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स एरिया. उसमें भी अगर एरिया को इम्प्लीमेंट किया तो एरिया का मेथड वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. रिटर्न में हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर. So as here is we are talking about radius, so 3 into 3.14 into r square के लिए s into s किया है. Okay, then the we are going to create a
object. So we cannot create the object of interface. So that is what we are going to see here. Okay. In on page load event, we have to create the object of रेक्टेंगल क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास बिकॉज इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ मेथड प्रोटोटाइप और मेथड डिक्लेरेशन है. सो फर्स्ट हम लोग रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर R1 डॉट शो से मेथड कॉल करेंगे. जो शो मेथड है वो डबल व्हाट शो मेथड क्या कर रही है, डबल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, वो हम लोग एक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे. डबल एक्स इज इक्वल टू R1 डॉट शो. देन सर्कल में भी वैसे करेंगे, वाई वेरिएबल में डबल वाई वेरिएबल में C1 डॉट शो. तो यहाँ पे R1 डॉट शो हमको रेक्टेंगल का एरिया देगा, C1 डॉट शो हमको सर्कल का एरिया देगा. दो लेबल रहेंगे, दो लेबल में हम लोग उसको एक्स एंड वाई जो वैल्यू लिया है उसको टू स्ट्रिंग में करके कन्वर्ट करेंगे. ओके, so this is how we are going to do. So this is area. Okay, so let us implement this particular thing. Okay, I'll share the screen now. So hope Visual Studio is visible to you. Okay, I'm closing the existing files here so that it will not create a confusion. Okay, so okay, all files I'm closing, previous files, and we are going to create a new file. So I'm just right clicking on this particular practical. Okay, give me a minute. Okay, we are going to add a new web page in practical to our previously created website, and I'm going to give the name interface prac. Because interface is keyword, I do not want to create any problem, so I'm not giving the name to page as interface. I'm going to give the name interface prac. Okay, without any space. So adding the page. Okay, then in design view, what we have to do here, we will write something interface method calling, and then here I am putting area of rectangle. Okay, and then I'm going to write area of circle. Okay, and to display the result, I'm going to use label. So for rectangle, I'm going to use label 1. So I'm going to drag the label in front of rectangle text. Okay, and I'm going to drag the label second in front of area of rectangle. I'm going to double click on this particular thing, and before going to create anything, I need to create the interface and then I need to create the class. So code is very simple I have kept so that easily you will get the practical understood, and also in exam it will help. So I am just copying that code here. Okay, okay, so we are going to create a first interface and two classes. You can see here interface area as I have earlier explained. Okay, then class rect uska double show method, class circle uska double show method, and now we are going to create an object inside page load method. Okay, till that time for console practical you are going to do it for do it all the thing implemented in main method, but now we are with GUI, so we are going to create it with whatever method we want as a result of any event. Okay, everything is possible because यहाँ पे label हमारा दो है, उस पे हम लोग दिखा रहे हैं. Okay, I'll just run this and we'll wait for the output to load. Okay, you can see here the interface method calling.
ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26। ये वैल्यू कैसे आया? बिकॉज जब हम लोगों ने मेथड कॉल किया तब हम लोगों ने डायरेक्टली उसमें पैरामीटर की जगह पे वैल्यू पास किया है। ओके, दैट यू कैन ऑब्जर्व इन विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे देखो 3,4 हमने हार्ड कोडेड वैल्यू डाला है, और सर्कल का एरिया के लिए 3,4 हमने हार्ड कोडेड वैल्यू डाला है। अगर आपको यूजर से लेना पड़ता तो क्या रहता है, दो टेक्स्ट बॉक्स लेते थे, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू दो वेरिएबल में लेते थे, फिर वो वेरिएबल इधर पास करते थे। सो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, वी हैव डन इट प्रीवियसली ऑल्सो। सो लेट अस विल मूव टू नेक्स्ट प्रैक्टिकल using delegates and events. So we have to create a simple application to demonstrate use of following the concept of delegate and events. So we are going to create a delegate. So what we have to create, delegates are nothing but method which represent the prototype of method. So if you are going to call a delegate, I'm not talking about programming concept, context like that. If you are going to call the delegate, so the method which we are already having in our class, which matches the prototype of delegate, that will be called. So there might be more than one method that matches the prototype of our delegate. So there might be different name of method, but prototype will be same. Then as per the depending on the parameters, the delegate will decide which particular method to call on which particular time. So we are going to do this with page load method. We are going to take two labels, simple designing part hai. So already I have told you, but practically this is the most important method functionality of C sharp. Okay, because delegate is also one kind of encapsulation. Here मेथड प्रोटोटाइप क्या होता है, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट अ डेलीगेट। जब आप कोई भी एक क्लास लिखोगे, उस क्लास के पहले आप लोग एक मेथड डिक्लेयर करोगे डेलीगेट का। वो मतलब उस क्लास में आप लोग एक मेथड डिस्प्ले करोगे डेलीगेट का। तो किस तरीके से डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक आप लोगों का एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, डेलीगेट कीवर्ड आता है, फिर मेथड प्रोटोटाइप आता है। अब मेथड प्रोटोटाइप आपका ये यहाँ से यहाँ तक है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। स्ट्रिंग डीईएलई डेलीगेट के लिए शॉर्टकट नाम लिखा है। मतलब कोई भी मेथड जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, प्लस जो वाइड मतलब कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, वो इस डेलीगेट के प्रोटोटाइप को मैच करता है। मतलब क्या क्या चीज होनी चाहिए डेलीगेट के प्रोटोटाइप के लिए, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, प्लस वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने दूसरा मेथड लिखा है, पब्लिक स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मेथड प्रोटोटाइप देखो, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग डिस्प्ले वन। तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप भी हो गया, मेथड का नाम अलग है लेकिन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो ये डेलीगेट के प्रोटोटाइप को मैच करता है। ओके, फिर इसमें कुछ तो भी स्ट्रिंग लिखा, उसको रिटर्न किया। सेकंड मेथड देखो यहाँ पे ही स्क्रीन पे, पब्लिक स्ट्रिंग डिस्प्ले। ओके, मेथड का नाम चेंज हो गया लेकिन प्रोटोटाइप को वो मैच करता है। तो इसमें भी कुछ एक दूसरा नाम लिखा है, उसको रिटर्न किया है। ठीक है, देन दूसरा इवेंट में जब मैं पेज लोड में कॉल करता हूं तो डेलीगेट कॉल कैसे होता है। ओके, डेलीगेट कॉल कैसे होता है, यहाँ पे देखो आप, डेलीगेट डेलीगेट्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो मैंने बनाया है ऊपर देखो, डीईएलई हमारा डेलीगेट है, फर्स्ट लाइन। ओके, पब्लिक डेलीगेट स्ट्रिंग, हमारे डेलीगेट का नाम क्या है, डीईएलई। डेलीगेट क्या करता है, दूसरी मेथड को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डेलीगेशन जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि नॉर्मल जनरल लैंग्वेज कंसेप्ट में हमारे कंट्री को कोई रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग के मेथड्स को डेलीगेट रिप्रेजेंट करता है टू हाइड द डिटेल्स। यहाँ पे आप देखो, डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट बना है D1, ओके, न्यू डेलीगेट, और उसमें हमने पास किया डिस्प्ले वन। यहाँ पे हमने मेथड कॉल नहीं किया, यहाँ पे हमने मेथड का नाम पास किया। तो डेलीगेट अपने आप इस मेथड को कॉल करने का कोशिश करेगा क्योंकि प्रोटोटाइप मैच होता है। देन D1 को कॉल करेंगे तो पहले D1 में हमने क्या दिया है, डिस्प्ले वन। तो डिस्प्ले वन वाला मेथड कॉल होगा जिसमें अलग से एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है। फिर डेलीगेट का दूसरा ऑब्जेक्ट बना है, उसमें उसी तरीके से डिस्प्ले टू कॉल किया है, बट कॉल कब हो रहा है, जब हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट ब्रैकेट करोगे सेमीकोलन।
अगर समझो मेरे डिस्प्ले वन और डिस्प्ले मेथड में और डेलीगेट के प्रोटोटाइप में अगर पैरामीटर्स रहते थे, तो वो पैरामीटर तो यहाँ पे नहीं दे सकते हम लोग, वो पैरामीटर आपको कहाँ पे देने पड़ेंगे, इस ब्रैकेट में, जब हम डेलीगेट कॉल। तो कॉल क्या हो रहा है, D1। D1 नाम का कोई मेथड है क्या आपके पास? नहीं। आपके पास कौन सा मेथड है, डिस्प्ले का, लेकिन वो डिस्प्ले मेथड आप डेलीगेट का यूज करके कॉल कर रहे हो। तो दैट इज द बेनिफिट कि D1 जो मेरे डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है वो डेलीगेट कर रहा है डिस्प्ले वन मेथड को। ओके, द मेथड इज डिफरेंट बट मेथड को डिस्प्ले करने का काम डेलीगेट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड डिस्प्ले वन इज डन बाय D1। डेलीगेट का मतलब ही होता है कि समथिंग इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स, वही यहाँ पे हो रहा है। एंड देन हम लोग लेबल वन पे उसको कॉल कर रहे हैं और लेबल टू पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मेथड का रिटर्न टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में तो ऑब्वियसली D1 और D2 ये डेलीगेट कॉल कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो कॉल क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू क्या है, स्ट्रिंग है। गॉट द पॉइंट? Okay, so here is the thing, let us execute this one. Okay, I am going to stop this working project. Hope Visual Studio is visible to you. Okay, okay, I am going to add a new page in Practical. Add new item, web form, and इसका नाम रखते हैं delegate page. Okay, delegate page. I am trying to explain you the concept along with the practical so that थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन आज आज हम लोग ध्यान नहीं देंगे, फिर रिवीजन लेक्चर में कर लेंगे या एग्जाम के पहले कर लेंगे। तो पहले मैंने बोला कि उससे क्या होगा, कंसेप्चुलाइजेशन अपने माइंड में क्लियर नहीं होगा। दैट इज ओनली फॉर नीड टू फेस द एग्जाम, के लिए वो प्रिपरेशन होगा। एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, बट उसका कोई आगे फ्यूचर में यूज नहीं होगा, बिकॉज वो टेम्पररी मेमोरी रहेगी। तो वी हैव क्रिएटेड अ पेज। यहाँ पे जस्ट टू लेबल लेना है हम लोगों को, ताकि दोनों डेलीगेट मेथड प्रॉपरली कॉल हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, और हम लोग यहाँ पे डेलीगेट क्रिएट करेंगे। तो क्लास लेवल पे हम लोगों को डेलीगेट क्रिएट करना है। ओके, so I'm just getting the code here and then I will again explain in short. Okay, okay, 1 minute. Let me copy complete code and then we will discuss the thing. तो सिंपली आप लोगों को याद रखना है, डेलीगेट क्या कर रहा है, दूसरे मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी एड ऑन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने डेलीगेट क्रिएट किया, नाउ वी आर इन विजुअल स्टूडियो वहाँ पे। और नॉर्मली इसी क्लास में हमने दो मेथड क्रिएट किया, डिस्प्ले वन जो डेलीगेट के प्रोटोटाइप को मैच करते हैं। प्रोटोटाइप आप लोगों को समझ में आया रहेगा, रिटर्न टाइप। ओके, मेथड का नेम प्रोटोटाइप में नहीं आता, लेकिन उसके पैरामीटर्स आते हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर्स है ही नहीं। सिमिलरली मैचिंग टू प्रोटोटाइप ऑफ डेलीगेट, हमारा डेलीगेट का हम लोगों ने दो मेथड बनाया, फिर डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कॉल किया। ओके, वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम। लेट अस वेट फॉर द आउटपुट। Okay. Hope you are okay. You can see there, पहला मेथड कॉल किया उसमें अलग स्ट्रिंग रिटर्न हुआ, और दूसरा मेथड कॉल किया उसमें अलग स्ट्रिंग रिटर्न हुआ। So this is the output of delegate method. Okay. So we are making some changes here. Okay. Instead of creating two delegate objects, I have made some changes. I have created D1, then I have assigned the method display to representation, and then called D1, and then put the D1 ka result on label1 dot text. After that, then I have used D1 because already one object is created. Okay, delegate instance is created D1. So unnecessarily D2 क्यों वापस से यूज करना है? So D1 को मैंने क्या किया, ऑलरेडी वो इंस्टेंशिएटेड, तो यहाँ पे मुझे DELE लिखने की जरूरत नहीं, D1 इक्वल टू न्यू DELE। एंड नाउ second time when I'm instantiating the delegate instance, I have passed display 2, and then again I have called D1 only. Okay, एंड इट दिस एट दिस टाइम लेबल 2 पे ये D1 किया, तो यहाँ पे इसके बाद में
डिस्प्ले D1 को अब असाइन हुआ, उसके पहले क्या था, डिस्प्ले 1. So this is also possible with delegate. Okay, you can observe the result. The method result will be the same. Okay, let us move to next practical. Let us try to learn exception handling practicals. Okay, so already this practical we have executed at the time of our theory explanation. If students remember, the same practical we are going to execute here. Simple exception handling hai. So for that, what we are going to do? We are going to uh, get one number, okay, and division of two numbers we are going to put here. So I am taking division of two numbers is written here, and I am taking only one text box. Okay. So is it possible? Yes. What I will do, whatever number is put here, let us say 3, then I will create a practical like 3 divided by 3. Okay. Same number I will use for division. Okay. So number can be divisible by itself. It can return you result 1. So I will put on result. So we will intentionally try here to catch the exception. For example, which exception here we can caught? Divide by 0. If I am putting here 0 and 0 divide by 0, if we are doing, or you can also take two text boxes, there is no problem. Okay, I have just tried new thing to bring in our practicals. You can get a two text box and get two different numbers and try to devise them. Okay, so here we have implemented very simple exception handling practical. Okay, remember, one text box, one button and one label to design. Okay, then on button one click, we are using exception handling mechanism. The code which is suspicious of exception, we are going to put in try block, and then we are going to catch the system dot divide by 0 exception. So what we are trying to do here, the same thing that this particular practical we have executed in our theory session also, at the time of theory session also. Okay, first we have taken a variable integer a to convert into that is converted into integer 32 because text is returning string. तो जो भी नंबर यूजर डालेगा उसको हम लोगों ने integer a वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिया है. देन आई हैव टेकन अ प्री डिफाइंड एरे ऑफ इंटीजर टाइप. एरे का नाम है b, उसमें वैल्यूज है 12, 23, 33. तो जो भी नंबर आप दोगे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर देगा, आई विल ट्राई टू डिवाइड दैट divisor I can take from user. Okay, and I will try to divide these numbers 12, 23, 33 by that number provided by user which is stored in variable a. So in another temporary variable integer result val b of 3, b of 3 I am going to try. So b of 3 कौन सा number है? Can student post in this one? ये index है और मेरा b ये है. So I'm just waiting for your reply. B of 3 में कौन सा digit आएगा? 33 आएगा? You can unmute yourself, you can tell, or you can put your answers in the chat box. B of 3 कौन सा element है इसमें से? B is our array, integer array. B of 3 इस नंबर में से कौन सा नंबर है? 12 है, 23 है या 33 है? तीनों ही नहीं है सर. Yes, that is. सर नहीं है तीनों. Yes, yes. Thank you, thank you. Listen, B of 3 नहीं है और हम लोगों का प्रैक्टिकल है एक्सेप्शन हैंडलिंग का. मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज बी का इंडेक्स क्या है? मैक्सिमम 2. इंडेक्स स्टार्ट विथ 0. तो 12 का इंडेक्स हुआ 0, 23 का इंडेक्स हुआ 1, 33 का इंडेक्स हुआ 2. बट लिखते वक्त प्रोग्रामिंग में मैंने लिखा है बी ऑफ 3 डिवाइड बाय ए. ए अभी हमको पता नहीं, लेकिन इसी पॉइंट पे मुझे ये पता है कि बी ऑफ 3 इंडेक्स इज नॉट एग्जिस्ट. So it is going to raise an exception called as index out of range because वो index available नहीं है. हम आउट ऑफ रेंज इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जबकि हमारा एलिमेंट सिर्फ 2 इंडेक्स तक की देता है. तो दिस एक्सेप्शन विल बी रेज देयर और फिर वो कैच होगा. तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में क्या होगा? ex डॉट टू स्ट्रिंग.
What is the ex here? Ex is a argument of system dot index out of range exception. So it will provide you the error message. What will be the error message index out of range का? Index was outside the bounds of the array. ओके कहाँ पे आया कहाँ पे आया जब हम लोग ओके फिर हमने ये एक और कोड क्यों लिखा है यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो ओके तो लेट अस से अगर मैं ये करेक्ट करता हूँ बी का 2 लिखता हूँ और ए जो इनपुट दिया यूजर ने वो 0 देता हूँ तो डिवाइड बाय जीरो इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो विच एरर विल बी जनरेटेड सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन और वो भी यहाँ पे कैच होगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा एप्लीकेशन एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले जरूर होगा so let us execute this practical okay so I will get this particular button one ka code there and then we will first design the page okay so I will keep it ready so that we can use it so I'm going into Visual Studio I will stop the current execution hope you are able to see the Visual Studio I will add a new page here web form for handling the okay exception pract okay on this page what we have given okay I will write here exception handling demo okay okay enter divisor value okay okay and then in front of that I will take one text box okay then what we need a button okay button का text what I'm going to put here as properties में जाके what I'm going to write result and what is remaining here a label okay I'm going to put a label here I'll drag this label save this one and then I will go to ASPX page and there sorry we have to put it on result button ka on click okay so I'm going to put here the code. First try block I have copied there I have explained you what is that try block okay then this is the variable this is temporary variable okay इसको एक लाइन में करते हैं got my point done and now we will complete the code okay there is one bracket extra so we will delete it you can see here okay लेकिन जैसे ही ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है तो जीरो का नहीं आएगा तो व्हाट वी विल डू we will run this program okay we will see the output and then we will change the index and then we will change the input so I am running this particular program okay hope you are able to see the output screen here whatever value we are putting let us say I am putting 3 and when I will click on result it is going to give me index out of range exception okay now if you want to uh, get the exception of divide by 0 because यहाँ पे दोनों exception हो रहा है यू कैन सी हियर इन कोड क्या क्या हो रहा है अगर मैं 0 देता हूँ तो okay let us say what will happen now in the output I am changing divisor value to 0 then again I am clicking the result button but exception is same okay okay so I am getting some messages out of index error आएगा invalid यहाँ पे किसी ने लिखा है कौन सा भी नहीं है ऐसे लिखेंगे डिवाइड बाय जीरो भी दिया तो भी क्या होगा कोडिंग में एग्जीक्यूट करते वक्त
एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो. द फर्स्ट पार्ट विच इज इवेल्युएटेड इज गोइंग टू बी द दिस वन. ओके, होप यू आर एबल टू सी द कोड. जो विजुअल स्टूडियो में ये आप लोगों का यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है ये पहले कैच हुआ, तो एक्सेप्शन वहीं पे रेज हुआ. सो ये एक्सेप्शन रेज होकर वो कैच में आया. कैच ब्लॉक के बाद आप लोगों का एक्सेप्शन, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ टर्मिनेट हो चुका है. तो डिवाइड बाय जीरो तक वो गया ही नहीं, बिकॉज डायरेक्टली वो उसका पहला एक्सेप्शन कैच करेगा. So what we will try to do, we will put this as a index b of 2. Okay, अभी हम चेंज करेंगे और अब इनपुट देते वक्त what we will give, a का वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा वो उसको हम लोग क्या देंगे, 0. तो आई एम अगेन रनिंग द प्रोग्राम जहाँ पे मैंने इंडेक्स चेंज किया. होप यू आर गोइंग टू सी, एबल टू सी द आउटपुट. नाउ यहाँ पे डिवाइजर में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 0. जब मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो विच पर्टिकुलर exception will be catch, system dot divide by 0 exception. Okay, so what is we have done, the error ex argument gives us detail attempted to divide by 0 where the line number is all details are given. तो एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में भी आए, आपके विजुअल स्टूडियो में भी आउटपुट में आपको एक्सेप्शन दिखते हैं. यहाँ पे देखो डिटेल में बता रहा है कौन सा फाइल में कौन सा पर्टिकुलर लाइन में एरर आया है, किस तरीके का आया है. so that you can see and solve. Okay, if I am going to write here 33, it is supposed to give me value 1. If I am going to write here 11, it's supposed to give me result 3 because there is no exception. If I am putting to 0, it is going to give me divide by 0 exception catch. So thank you so much student. I am stopping here for the day. Thank you so much for your cooperation.